So when we're discussing the cell surface membrane and transport, what do? We basically need to understand that the cell surface membrane is made up of a molecule or a biological molecule more specifically, and the name of that biological molecule is phospholipid. Now, what's a phospholipid? Phospholipid is basically a type of a lipid in which there is a phosphate group attached to a lipid molecule. Now, what's a phospholipid molecule? In this diagram, you can see here the details of a phospholipid. Phospholipid molecule में हमारे पास एक फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का हेड होता है जिसको हम पोलर हेड कहते हैं. उसके साथ दो नॉन पोलर टेल्स होती हैं which are we call as two fatty acid tails. In other words, we say both those tails are non-polar and they are hydrocarbon in nature. So ये terms हम use करते हैं इन tails को distinguish करने के लिए from the head. अब जब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को हम देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का ये एंड जो फर्स्ट पार्ट ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे पॉइंट करके, दिस बेसिकली इज द पोलर पार्ट एंड दिस पार्ट इज द नॉन पोलर पार्ट. नॉन पोलर का मतलब होता है ये हाइड्रोफोबिक है, पोलर का मतलब होता है ये हाइड्रोफिलिक है. ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं एंड यू शुड बी एबल टू यूज बोथ दीज टर्म्स इन योर आंसर्स. पोलर हेड एंड हाइड्रोफिलिक, व्हाट डू दे मीन? दे बेसिकली मीन कि इस पोलर हेड के ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मौजूद है. व्हाट डू यू मीन बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस हैं. कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पार्शियल चार्जेस होते हैं ये पार्शियल चार्जेस की वजह से या कंप्लीट चार्जेस की वजह से ये जो एंड होता है या वो स्ट्रक्चर जिसको हम पोलर कहते हैं या हाइड्रोफिलिक कहते हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकता है या वाटर में सॉल्युबलाइज हो सकता है. Why is it able to solubilize in water? The reason is water itself is polar as well. Water के ऊपर खुद भी charges होते हैं, temporary charges होते हैं, और इन temporary charges की वजह से it is able to basically solubilize the polar part of phospholipid. ये पूरा molecule water soluble नहीं होगा. Only this end will be water soluble because it can make bonds with the water molecule, both being polar in nature. So polar, hydrophilic, unequal distribution of charges, all these three things mean the same thing. Now coming to the tails, there are two non-polar tails. जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दोनों फैटी एसिड से बनी हुई हैं, हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं. ये जो हाइड्रोकार्बन की दो फैटी एसिड टेल्स हैं ये नॉन पोलर है. अगर नॉन पोलर है तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें किसी भी किस्म का कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मौजूद नहीं है. देयर इज नो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर. Now, when you try to dissolve such a molecule in water, for example, this is the water that I am having, and in this water, I try to put a phospholipid molecule. How the phospholipid molecule will arrange itself? It will dip its head in water because it can form those temporary bonds with water molecule, while the tails, they will point away from the aqueous environment. वो उस वाटरी एनवायरनमेंट से अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगी. एज अ रिजल्ट these tails will not be solubilized in water, but the head will be solubilized in water. So at one given time, this phospholipid molecule will be soluble in water as well as insoluble in water, owing to the properties of the phospholipid head and the hydrocarbon tails. ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स होती हैं ये फॉस्फोलिपिड की टेल्स सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं. सैचुरेटेड टेल्स के अंदर हाइड्रोकार्बन के बीच में किसी भी किस्म का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता. सैचुरेटेड का मतलब है पूरी चेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे. और ये जो टेल्स हैं दो, इन दोनों में से कोई एक टेल या दोनों टेल एट वन पॉइंट और एट मल्टीपल पॉइंट्स अनसैचुरेटेड हो सकती है कि उसमें किसी जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के साथ कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज फैटी एसिड टेल की चेंज हो जाती हैं, जो आगे हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल में पढ़ते हैं. आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सिंगर निकल्सन ने 1972 फॉस्फोलिपिड बायलर का मॉडल प्रपोज करने वाले वो साइंटिस्ट थे जिनका प्रपोज किया हुआ मॉडल आज भी स्टडी किया जाता है और अप्रूव्ड है. ग्लोबली इट इज फॉलोड एंड इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल्स ऑफ एकेडेमिया.
जब हम बात करते हैं सेल की, सो यू नो द सेल इज बेसिकली हैविंग साइटोप्लाज्म इनसाइड एंड देयर इज अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल। दोनों जगह पे पानी प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। दिस सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। जब हम इस सेल सरफेस मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं एट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 250,000, ये हाईएस्ट मैग्निफिकेशन अचीवेबल होती है हमारे पास, तो हमें हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन एक ट्राई लैमिलर अपीयरेंस देती है। ट्राई लैमिलर अपीयरेंस इज व्हाट दिस सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लुक्स लाइक अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ 250,000 मैग्निफिकेशन। ट्राई लैमिलर अपीयरेंस के अंदर एक हमें डार्क बैंड दिखता है, नीचे भी एक डार्क बैंड दिखता है और उसके दरमियान में हमें कुछ लाइट एरिया दिखता है। दिस इज व्हाट वी दिस इज व्हाट कैन बी ऑब्जर्व। इस पूरे की विड्थ होती है 7 नैनोमीटर। ये जितना स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, दिस बेसिकली इज दिस सिंगल लाइन। ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया। इसके बाहर आउटसाइड द सेल, दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल। और ये जो लेयर है, ये 3 लेयर्स हमें दिख रहे हैं। इन 3 लेयर्स को समझने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए एंड सिंगर निकलसन basically proposed a phospholipid bilayer of model of membrane. What they said was that this cell surface membrane, which looks like this kind of structure under an electron microscope, is having a phospholipid bilayer. Bilayer का मतलब होता है 2 layers. Bilayer means 2 layers. So this is how the phospholipids arrange themselves in a cell surface membrane. Basically, there is a single monolayer and there is another monolayer. Both are superimposed on one another. The monolayers are arranged one on top of the other to form a bilayer in such a way कि एक का head होगा तो उसकी tails उसके नीचे और दूसरे की tails और उसका head उसके नीचे. As a result, this kind of orientation basically aligns or lines up with the trilaminar appearance. ये जितने heads हैं जो बराबर बराबर में आ गए, ये सब के सब हमें ऊपर और नीचे दिखते हैं इस तरह के dark bands की शक्ल में. This is what they look like. And the tails, which are of a lighter tone, they are not that condensed as the head, so they appear of a lighter shade of gray in the skin. ये phospholipid bilayer का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। जब ये फॉस्फोलिपिड्स अरेंज हो जाते हैं इस तरह, तो इससे होता क्या है, बेसिकली ये जो हमारी ये हेड है सारे, ये आपको सोलबलाइज कर देते हैं मेम्ब्रेन को, बाहर की पानी में भी और अंदर वाले वाटर में भी, बिकॉज दे कैन डिजोल्व इन वाटर, दे कैन सोलबलाइज इन वाटर, दे कैन फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड्स विद वाटर। ये जो tails हैं, since they cannot form any bond with water, these tails form the interior of the membrane. इस membrane का जो interior है, ये सारा वो part है जिस जगह किसी भी किस्म का watery environment present नहीं है। ये water से दूर इन्होंने अपने आप को orient किया हुआ है। In this case, they form a hydrophobic interior. इन्होंने एक hydrophobic interior बना लिया यहाँ पर। This is what basically a phospholipid bilayer looks like, and this is basically how the Singer-Nicholson phospholipid bilayer model actually shows what the membrane basically is composed of. ऐसा नहीं है कि membrane के अंदर खाली ये चीजें हैं, हाँ सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स ही हैं, मगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसकी डिटेल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स के अलावा इस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, देयर इज कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, बहुत सारी चीजें हमारे मेम्ब्रेन में आती हैं और उसी के साथ वी ऐड द फंक्शंस to each. This is what we discuss later on. This was all that I had to discuss in this overview lecture with you. That's it from my side. Thank you.